Good morning, everybody. Yeah, I can see some of you. Kindly share the video first of all so that other students can join us. Kindly share the video. Good morning, Bhavna. Good morning, Madhusudan. Okay. First of all, today I'm ready with more than say 17 writers which you will find there in the exam. If you prepare them, if you just I will upload this as a video on my YouTube channel also. Kindly rewatch it so that if you miss something, you can revise them. Clear? And another important thing that I have chosen certain writers from the postmodern age. And before I start these writers, because you all know that postmodern writers and the modernist writers have been given a lot much space in in the coming exams. For last few exams, I have seen that instead of asking questions from the writers from the history of English literature, they have been questioning us regarding the contemporary writers sometimes, and sometimes the writers who have either won the Booker Prize or say the Nobel Prize. Clear? Kindly share the video so that maximum number of students can join us. Clear? So before I begin, and when I upload it on my YouTube channel, I ask the students to kindly subscribe to my channel and press the bell icon. Okay. First of all, write down those regular students who have been watching us regularly. Write down first of all high modernism. What is the definition of high modernism? Because it is high modernism which paved way towards say postmodernism. Clear? Keep writing and keep writing. Yes, that you're writing high modernism. Actually, high modernism is a kind of a shape of, say, is a form of modernism itself. In modernism में और high modernism में ज़्यादा difference नहीं है. Clear? So let me talk about first of all the main and the chief characteristics of high modernism. The first thing is that, because when we say that somebody is modern, then literary modernism, modernism in music, modernism in painting, these are different things. Because if I say modernism in painting, then impressionism and post-impressionism, certain terms come to my mind. But one more thing occurs to my mind or strikes my mind when I say modernism or high modernism, that there is an unfaltering confidence in science and technology. आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी को कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो मॉडर्न का मतलब हम ये लेते हैं that he is very scientific, a kind of person who is very much rational. Clear? So जो enlightenment which came with say neoclassicism, ultimately it paved way towards industrialization and later on towards modernism. तो जब जितना ज़्यादा मॉडर्निस्ट होता गया आदमी, उतना ही ज़्यादा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनको लगता है कि दैट bureaucrats can handle the things. So obviously they moved away from the kind of a royal system of government and aristocratic classes. So एक चार पॉइंट आपको याद रखने हैं: साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड अ हाई बिलीफ इन ब्यूरोक्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स. ये जो चीज है ये हाई मॉडर्निज्म की तरफ लेके जाती है. वन थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट अटेम्प्ट्स टू मास्टर नेचर, ओके, इंक्लूडिंग द ह्यूमन नेचर ऑल्सो. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट समबडी हु इज मॉडर्न, so a modernist is one who tries to capture anything which is natural. Clear? So in one or the other way they are totally away from romantic writers. Clear? And the third one is an emphasis on complex environment. A third one is an emphasis on complex environment. And the fourth one is that it disregard for historical, geographical and social context in development.
They show a kind of disregard for historical, anything which is history. Modernists say that I will write my own history, or I will question this history. That is also one of the aspects of the postmodern writers. Clear? Anything which is geographical. आपने कभी देखा होगा कि जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्ट्स होते हैं या मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स होते हैं, हाई मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो जो भी स्पेस होती है उसको बिल्कुल अलग तरीके से यूज करते हैं. ठीक है. एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है दे यूज इट फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑल. सो ऐसे करके हाई मॉडर्निज्म इज वन टर्म. ठीक है. अब आ जाते हैं कि द काइंड ऑफ राइटर्स विच कैन अपीयर इन योर एग्जाम, जिनको आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये वो राइटर्स हैं. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट राइटर का नाम लिखिए. यस, काइंडली कीप राइटिंग यस सो दैट आई फील दैट यू आर कनेक्टेड. ओके. एंड काइंडली शेयर द वीडियो ऑल्सो इन द डिफरेंट ग्रुप्स वेर यू आर मेंबर्स. फर्स्ट राइटर का नाम लिखेंगे. आई हैव सीन क्वेश्चंस ऑन दिस राइटर इन द लास्ट 2-3 नेट्स कंटिन्यूसली. ओके. Write down Janet Winterson. G-E-A-N-E-T-T-E. Janet. J-E-A-N-E-T-T-E. Janet Winterson. W-I-N-T-E-R-S-O-N. Janet Winterson. ओके. जेनेट विंटरसन का नाम आपने सुना होगा. अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं बिकॉज suburban area she shows in her fiction, and a lot much queer element is present. Queer in the sense ये अपने नॉवेल्स के अंदर लेस्बियन की थीम इन्होंने रखी है. और इनका एक जो नॉवल है जिसपे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और वो अभी घुमा फिरा के फिर से क्वेश्चन दे सकते हैं. राइट डाउन ऑरेंजेस आर नॉट दी ओनली फ्रूट. आप में से किस किसने पढ़ा हुआ है ये नॉवल? ऑरेंजेस आर नॉट दी ओनली फ्रूट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस नॉवल? Oranges are not the only fruit. Okay. This novel is based on a homosexual, or you can use the word lesbian. Okay. एक माँ होती है, जिस तरह से वो अपनी लड़की को, वो उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड होती है, और वो किस तरह से उस लड़की को काफी ज्यादा रिलीजियस एटमोस्फेयर में रखती है. बट लेटर ऑन दैट गर्ल शी कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी, the needs of the body, and there also you cannot define somebody's body that these are only the dichotomy or the binary, that male and female. and ये जो हम परफॉर्मेबिलिटी की बात करते हैं, एक आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये नॉवेल्स क्यों पूछे जा रहे हैं. बिकॉज दीज नॉवेल्स आर रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ a kind of which we call postmodernism. Postmodernism में we don't believe in structuralism, because structuralism क्या होता है, वो binary में believe करता है that you have two things, positive, negative, nature, culture, male, female. I hope you understand, dark and the bright. But then there are certain other areas in between. The same thing is applicable on the sexuality also. Clear? कि आप कभी भी जब क्वेयर थ्योरी, राइट डाउन क्वेयर थ्योरी, वन क्वेश्चन विल सर्टनली कम फ्रॉम द थ्योरी सेक्शन. और जिनको पीडीएफ मिला है वो स्टडी करके देखें. उसमें आई हैव गिवन यू 3 बुक्स ऑफ थ्योरी. उस थ्योरीज की बुक्स में आप देखिएगा, वन पर्टिकुलर सेक्शन इज डिवोटेड टू क्वेयर थ्योरी. ठीक है. तो ये नॉवल इसलिए फेमस है बिकॉज इन दिस नॉवल देयर इज अ कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट वी कैन से, हु इज asserting her sexuality. Clear? And the second novel from the same writer is The Virgin in the Garden. The Virgin in the Garden. Right now. So you can understand that, who can be the virgin. There is a clear-cut connotations towards, questioning Christianity. So The Virgin in the Garden, 1978. This novel was published in 1978. And this novel is set. This is more important than the oranges are not the only fruit, जो मैंने आपको भी बताया था. उसका कारण बताता हूं आपको. Yes, लिखते जाइए so that I feel that you are connected, because it is Facebook. There are many students, who will come, they just see for 5 minutes and they will move on. But this class is meant for only the regular students. You all know it well. आज मैं YouTube पे क्लास लेने के बजाय मैंने सोचा कि मैं Facebook पे क्लास लेता हूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए. बिकॉज YouTube कई बच्चों को पता ही नहीं है हमारा. मुकेश पारिक कॉस्मोस, COSMOS. If you type this on YouTube, you will come to my
YouTube channel. Subscribe it and like all the videos. और इसमें मैंने अभी तक की सारी लाइव क्लासेस को अपलोड किया है, कुछ को छोड़ करके. और आप देखेंगे कि अगर आप लास्ट डेज में यू प्रिपेयर फ्रॉम माय वीडियोस, यू विल रियली बी बेनिफिटेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. द वर्जिन इन द गार्डन क्यों फेमस है? डू यू नो अबाउट दैट नॉवल? Sorry, not novel. Elizabeth I, she was a virgin. Okay, so this novel is set in 1953, in which there is a scene of the coronation of Elizabeth II. Elizabeth II जो अभी भी इंग्लैंड की महारानी है. So there is a concept, she has recreated that scene of, मैं फिर से नॉवल का नाम ले देता हूँ, The Virgin in the Garden. And those who are joining us late, ये कौन मुझे एंग्री इमोजी दिखा रहा है भाई? What is wrong with you? If you don't want to watch me, then you can move on. Come on. Why to show this angry emoji? So I was talking about the second novel, The Virgin in the Garden. Clear? And it was published in 1978. It was set in 1953, in which there is a scene of coronation. Coronation का मतलब होता है राज तिलक होना, okay, of Elizabeth II, and there is also the reference of Elizabeth I. So these kind of the novels of history, because अभी भी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है. एक पॉइंट लिखिए आप लोग, that मेटाफिक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में. लिखिए मेटाफिक्शन. You may ask me, like, what is metafiction? एक होता है historiographic metafiction. Write down this term. They will ask you this term in the exam. Historiographic metafiction. That why I have touched upon this particular novel written by Janet Winterson, The Virgin in the Garden, who is also famous for writing Oranges Are Not the Only Fruit. Oranges Are Not the Only Fruit is based on homosexuality. Clear? But this, The Virgin in the Garden, published in 1978, in which Elizabeth I and Elizabeth II, they are shown. This novel it falls in the category of historiographic metafiction. Yes, लड़के बताइए, आपने लिख लिया ये word? Have you written this word, historiographic metafiction? This term was coined by Canadian writer, Canadian critic Linda Hutcheon. Write down Linda, Lindahucheon. Linda Hutcheon is very famous for writing on her books on irony, because irony is considered to be the most important aspect of writing in the postmodern world. So Linda Hutcheon is a Canadian critic. Suppose they ask you a question, like sometimes they give you 4 writers and they ask the nationality also. Like this one is say British, or this one is from Canada. This one is from Australia. Clear? So we don't have many critics from Australia, but from Canada we have, and from America we have many critics. From Russia also we have many critics. Those who have contributed in the building of the theory, literary theory. Clear? So Linda Hutcheon has given us a term, historiographic metafiction. Clear? And historiographic metafiction, there are 3 things present. Write down. Fiction, there is an element of fiction plus history. Okay? In historiographic metafiction, there are 3 terms or 3 things which are involved. Fiction plus history plus theory. Okay? Theory, because you are already preparing for NET now, you know it, that the weightage of theory is 30 questions in our NET exam. Out of 100 questions, if 3 sections, 3 units are devoted to literary theory, literary criticism, and say cultural studies, it means 30 questions will be there. Clear? So it's my duty to keep telling you about fiction, non-fiction, and about the theoretical aspects. Okay. So Linda Hutcheon, who is famous for coining the term historiographic metafiction, it is a term which has 3 aspects in it. That is fiction, history plus theory. Okay. Now you will ask me, like, how many other famous novels are based on metafiction? So keep writing now. Write down the first novel, John Fowles, The French Lieutenant's Woman. It is a task today just to read the summary of this novel. Okay? Because it's a postmodern novel. John Fowles. You must have heard about the name of John Fowles. John, John Fowles. You are sitting in your rooms, keep speaking it loudly with me so that at least you can remember. Okay? And keep writing also.
and when I upload this on my YouTube, kindly rewatch it again. Okay, so John Fowles, The French Lieutenant's Woman. This falls in the category of historiographic metafiction. Okay. Second novel, The French Lieutenant's Woman Shatrupa. You asked me to repeat it. Historiographic metafiction has three aspects: fiction, history, theory. Okay. The first novel is, in this category was John Fowl, F-O-W-L, John Fowles' novel, The French Lieutenant's Woman. Should I tell the second one now? Salman Rushdie's famous novel, which was awarded the Booker of Booker, Midnight's Children. Honestly बताइए, how many of you have read originally Midnight's Children? Because Midnight's Children is a very interesting novel. It gives a very good reading actually. The innovative English of Salman Rushdie. Or if you read this novel once, whenever you get time after this exam in this lockdown period, I think you should order this novel and you should read it. You will come to know that, you know, why Indians are being given these awards outside India these days, why we have been recognized in English, though English is not our mother tongue. I think you will praise. That's why I keep telling, because we have a variety of idioms throughout India. We have different local dialects and languages, Odia, Malayalam. Yesterday I was watching a Malayalam movie. Okay, so there are different, say, idioms, and when you translate these idioms, The God of the Small Things, Arundhati Roy was awarded that Booker Prize. When I read that novel, I realized the very first sentence when I read, I came to realize that, oh, this new language, which is quite unique as per, you know, the idioms and vocabulary and the collocation is concerned. I think because of that, English people, you know, they are dying to read us, because it gives us it gives them a very interesting reading. Clear? Because literally the idioms of Indian languages have been translated into English instead of, you know, adopting their phrases and their idioms. So, you know, like the African writers, like Chinua Achebe. If you read Chinua Achebe, you come to know the names, you know, unpronounceable names and all. I can't elaborate it much because, you know, I have a long list to tell you. That's why I'm, you know, leaving it to you, Mr. Saiful Rahman, that kindly read this novel today, French Lieutenant's Woman. Again, there are three endings of this novel. This is all about, you know, a widow, you know, she has a relationship with a person. Then that person, you know, he doesn't, you know, feel like getting connected, you know, with this woman. Then he keeps helping her. Then, you know, she joins some, I think, a writer. There comes a reference of Rossetti in this novel. That's why, you know, this novel is very famous. Last time they asked you a question that how many endings are there, and then, you know, which pre-Raphaelite poet or say painter's name is associated with the novel John Fowles' French Lieutenant's Woman. So I cannot exactly tell you the story because it will take a lot much time. But you can go and just look at the summary and the ending. Clear? Now, Salman Rushdie, Midnight's Children, again, a very beautiful novel. As I was elaborating, I was giving my views that, you know, yeah, India has thousands of dialects and languages. Kundan, you are right. And that's why I'm telling you that, you know, when we Indians or say people outside England, when they use their English, that's why we have different Englishes in the world. We don't have one English. Okay, and these committees, you know, which award these, you know, these awards are given to the novels and all, they keep it in mind that there should be some philosophy, some human concern, and apart from the human concern and philosophy, there must be something new with the, you know, linguistics also. Clear? Okay, now let's come to this third novel, that is Shashi Tharoor's The Great Indian Novel. अच्छा, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको द ग्रेट इंडियन नॉवल के बारे में पता है? रिटन बाय शशि थरूर. राइट डाउन. शशि थरूर is a famous name. He is famous in India more for his vocabulary than for, you know, his his being a writer. But, you know, because he's an Indian writer, so he gives us a very easy reading to understand. But because he had been to you know, different countries representing India, so I think he has a marvelous. He had his college education from Xavier's, Mumbai Xavier's. So I can guess, like, you know, how much
great words he has. But the great Indian novel tells me about another aspect of Shashi Tharoor, and that is, this novel is about, कितने बच्चों को पता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार, बताइए. The great Indian novel, ये बहुत famous है. This novel is famous because it is nothing but, a summary of Mahabharata. Write down. This is simply the summary of Mahabharata. Right from the beginning, it starts like, time has been given a character, and then he speaks, and then all the characters keep coming. Clear? The great Indian novel. It means Shashi Tharoor wants to convey a message that the Mahabharata is the great Indian novel in poetry. Okay, Shashi Tharoor's novel, the great Indian novel. Now, why it is historiographic metafiction? Again, because it has a fiction, okay, then history and theory also. Theory means you keep putting up, your theories. Theories are like in our last class I was talking about, and there are different theories, post-colonial theories there. There is, psychoanalytical theories there. Structuralism is there. Post-structuralism is there. Okay, reception theory is there. New criticism is there. So all these things are included in one or the other way. Next, fourth novel in this category, Michael Odanje. Michael, Michael Odanje. Odanje की spelling थोड़ी अलग है. ये आज Canadian writer because he took citizenship of Canada, but he's from Sri Lanka. Michael Odanje, Ondatji. Ondatji. I repeat the spelling, Ondatji. Odanje we pronounce it. Michael Odanje is the English patient. Anil's Ghost is also famous by this writer. You should write both the novels. The English Patient. The English Patient. You will certainly find some questions from these novels. These are world famous novels. You can see in my library, in the back, I have all these novels with me. The English Patient, and there is another novel, Anil's Ghost. Anil is the name of a girl she's the protagonist. Okay, Anil's Ghost and The English Patient. Write down the fifth novel in this category, Thomas Pynchon's. Thomas, Thomas, Thomas Pynchon, Pynchon. Thomas Pynchon's novel, Mason and Dixon. Mason, Mason, and Dixon. You will 100% get a question. Either they will ask you, a matching kind of question in the exam, or they will ask you the name of the protagonist, because this Thomas Pynchon's novel also falls in the category of historiographic metafiction. Okay? Write down the next name of the writer. Keep writing yes so that I feel you're connected. Sometimes, the connection becomes weak. Kurt Vonnegut. K-U-R-T. Kurt Vonnegut. Vonnegut. Kurt Vonnegut. Vonnegut. Kurt Vonnegut's Slaughterhouse 5. Write down. This is, my goodness, I think there is a movie also based on this novel. Slaughterhouse 5. You can imagine if, there is a term slaughterhouse, then it is related to Auschwitz, the Nazi mass killing, by this Hitler. So this novel is also famous, Slaughterhouse 5. Okay, so I started with Janet Winterson. I talked about 2 novels. I'm repeating so that you people can, or those who joined us late can be, given the information. Oranges Are Not the Only Fruit. It is based on a lesbian finding for her identity and then leaves her mother's house. Okay. The second novel was from the Janet Winterson, The Virgin in the Garden, 1978 it was published, and there comes the references of to Elizabeth I and Elizabeth II. Okay. And then I was telling you that, these novels fall in the category of historiographic metafiction. And before that, I started talking about high modernism, because most of my students are not aware, they are simply aware about modernism. I have already uploaded 2 videos on modernism. Kindly watch it. जब तक आप लोग सीरियस नहीं होते हो, जब आपको बहुत ही क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है और वो आपको बताता है ये वाला वीडियो देखो, ये वाला टर्म देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो जब आप
एग्जाम देके आओगे ना तो आपको तब याद आएगा कि हाँ सर हमें हर चीज बता रहे थे, अगर हम उस वक्त ध्यान दे लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, अगर किसी ने कल रात को मैंने एक पीडीएफ भेजा है सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, वो एक बहुत शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मैंने पीडीएफ बनाया है। देर आर 77 पेजेस इन दैट पीडीएफ। आप एक काम करेंगे, सभी बच्चे प्रॉमिस करो, जो भी पेड स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि आप अगर उस बुक को पढ़ लेते हो 2-3 दिन लगा करके, तो एटलीस्ट यू विल गेट मोर देन 20 to 30 questions from that PDF, because I worked hard and prepared a complete PDF in which I can incorporate all the major writers in the history of English poetry, English novel, English drama, and all the literary ages and all. So अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, 2 या 3 दिन आप उसको दे देते हो, तो आई बेट के आपको 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। हाँ कुंदन, मैं आपको नहीं दे पाया, आई एम सो सॉरी। मैं अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे आफ्टर द क्लास यू रिमाइंड मी, आई सेंड इट टू यू। आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं दे पाया क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आई कीप आई टायर्ड सेंडिंग इट इन द नाइट एक्चुअली, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो हमने ग्रुप नहीं बना रखा है। मैं पहले बता दूं, कई बच्चों को लगता होगा कि इन्होंने ग्रुप क्यों नहीं बना रखा। वो बच्चे एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड लॉट मच ट्रबल हैज बीन क्रिएटेड रिसेंटली इन माय ग्रुप, सो आई हैव बीन sending them a history of English literature. Bhavna Mali, you are asking which PDF. If you didn't receive it after the class, kindly ask me, I will give you that PDF. And my PDF material is paid. Those who want to buy it can contact me. Clear? चलिए, my number is 9828402032. अब वापस आते हैं। चलिए, अब एक नया राइटर का नाम लिखिए। ये बहुत फेमस राइटर है, A.S. ब्याट, A.S. ब्याट। इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। सॉरी भावना माली, मैं आपको आज दे दूंगा। मैंने कहा ना, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई समटाइम्स get tired in sending the PDFs and all. So I will send you, don't worry. Write down A.S. Byat, B-Y-A-T-T. A.S. Byat. इसका नाम एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा है, but 100% they will ask you because she is a Booker Prize winner writer. She was awarded Booker Prize in 1990. Okay, her novel's name is Possession. Write down Possession. Its subtitle can also be asked, a romance. Possession, a romance, 1990. Possession is the name of the novel. Its subtitle can also be asked, a romance. Okay, it was published in 1990. In the same year, it was awarded the Nobel Prize. This also falls in the category of historiographic metafiction. Okay. Okay. So now we already have talked about so many novels, and Linda Hutcheon, the Canadian theorist critic, whose concept of historiographic metafiction. Now write down Alan Hollinger's name, another important writer which you will see there in the exam. Alan, A-L-A-N, Alan Hollinger's, H-O-L-L-I-N-G-U-R-S-T, Alan Hollinger's, A-L-A-N, Alan Hollinger's. आप में से किस किस ने इसको सुना है? Because he is a very famous writer. He is famous for writing gay fiction. कई हम इंडियंस हैं, तो हमें कई बार लगता है कि लेस्बियन और गेज जो हैं, we don't welcome them. Okay, but let me remind you that in today's time, the third gender is given a lot much space, and we have started talking about, in a very humanistic manner. A lot much researches are going on in the departments of English and the sociology, in psychology also. Clear? And we have been talking a lot much about the people who fall in the category of LGBTQ+. Clear? So this Alan Hollinger's is famous for writing gay fiction, and I think the question had already appeared in the exam, but this time they will ask you a question, from the detail of this novel. The Swimming Pool Library. Write down The Swimming Pool Library. The Swimming Pool Library. It was published in 1988. Okay, this is again a world famous novel. इस नॉवल में ऐसे बता रखा है कि कैसे एक लड़का है, वो किसी
मतलब अपने परिवार से थोड़ा अलग रह रहा है, फिर किसी बड़े आदमी के कांटेक्ट में आता है, और किस तरह से देयर इज अ लॉट मच टू टेल अबाउट दिस नॉवल. आप एक काम करेंगे, प्रॉमिस करो पहले कि आप इसकी समरी डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज देयर कम्स द रेफरेंसेस ऑफ ऑल द अदर फेमस French gay writers also, gay painters also, gay filmmakers also in this movie. So in this novel, this novel is very famous. If you read the summary in detail, if you can't read, you can ask me. I will give you the summary. Clear? This is very famous. And another novel from the same writer is The Folding Star. It was published in 1994. The Swimming Pool Library was published in 1988. Okay. पहले आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि आप द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी की समरी को डिटेल में पढ़ोगे, एंड द काइंड ऑफ नेम्स विच विल अपीयर, द नेम्स ऑफ राइटर्स, and if you are reading the hypertext, you can go to the different links and keep maintaining your notes. This is the only way that you can abreast yourself with the knowledge. Clear? And then comes the another important writer, Peter Croyd. Write down. Peter Croyd का नाम उन्होंने 2 या 3 नेट पहले पूछा था एग्जाम में. Peter Croyd. How many of you are aware about Peter Croyd? P-E-T-E-R. Peter Croyd. A-C-K-R-O-Y-D. P-E-T-E-R. Peter Croyd. A-C-K-R-O-Y-D. Peter Croyd. Okay, Peter Croyd is very famous. He is famous for writing the biography of T.S. Eliot, Dickens, Charles Dickens, and William Blake. He is famous for writing biographies of T.S. Eliot, Charles Dickens, and William Blake. Okay, so he's famous, a very famous writer, and his novel, which falls in this category, दोबारा बोलता हूँ, Peter Croyd. Okay, he's famous for writing biographies of these famous writers: T.S. Eliot, Charles Dickens, and William Blake. ठीक है? Okay. Now write down its historiographic metafiction category novel, The Last Testament of Oscar Wilde. ये आपको 100% पूछेंगे एग्जाम में, because as I told you that today's class is not exactly meant for historiographic metafiction, but postmodern novels has this category of historiographic metafiction. So it's my duty to tell you, out of these novels, suppose I talk about 20 novels and writers, then 100% there will be at least 5 questions will be there from these 20 questions. Okay, after great research I have come to this. Clear? So write down Peter Croyd's novel, The Last Testament of Oscar Wilde. The Last Testament of Oscar Wilde. It was published in 1983, and postmodernism is considered to be actively in mode after 1950 or say 55. Clear? So Peter Croyd, famous for writing the biographies of Charles Dickens, T.S. Eliot, and Oscar Wilde. T.S. Eliot, Charles Dickens, and William Blake. Okay, and his famous novel, which falls in historiographic metafiction, postmodern things are there in the novel, The Last Testament of Oscar Wilde. How many of you are aware about Oscar Wilde? Because I think there is not a single net where they don't ask us a question from the works of Oscar Wilde. The importance of being earnest, Lady Windermere's fan, then the story collection. Those who are students who have taken admission in offline and online classes, they know it. I sent you a PDF of all the great stories. In that you will find stories by this writer. How many of you are aware about this Selfish Giant, the famous story by this writer? Selfish Giant. Have you read Selfish Giant? Yeah, not a single answer comes. It means you should be aware about. You just read that PDF, and those who are watching me, they should do one thing. They should go to the section of the bibliography or any book you have, the bibliography of Oscar Wilde, because Oscar Wilde is a constant presence. He shows his constant presence in the net exam. Okay, The Art of Lying, and there are so many different essays. So this writer is a versatile one. Clear? Okay, now comes to this Charles Palliser. Write down another name in today's class where you can find a question. Charles Palliser,
Charles, Charles Palliser, Palliser. कितने स्टूडेंट्स ने चार्ल्स पैलिसर का नाम सुना है? How many of you are aware about Charles Palliser? Charles Palliser is famous for the Quincunx. एक नॉवल है इनका, लिखो द Quincunx, Quincunx, द Quincunx. बोल के देखो एक बार. बोलिए, द Quincunx. अच्छा, मैं आपको सभी को एक क्लास के बीच में एक सलाह देना चाहूंगा. मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कम से कम 3-4 डेथ हुई हैं कोरोना से, बिकॉज दे टुक इट वेरी लाइटली एंड दे ऑर्गेनाइज्ड सर्टेन स्मॉल फंक्शंस इन द फैमिली एंड देन समबडी केम हु हैड कोरोना एंड देन इट स्प्रेड. अभी आप देखिएगा इस वक्त जितना ज्यादा कोरोना फैल रहा है उससे हमें पता चलता है कि आई थिंक दिस इज द ओनली टाइम, बिकॉज ऑन न्यूज चैनल्स में तो केवल रिया ही रिया आ रही है. रिया चक्रवर्ती. इससे अच्छा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें कि भाई वो बाहर ना जाएं. ठीक है? यू कैन लुक माई कंडीशन, माई लॉन्ग हेयर. आई डोंट आई कांट मस्टर द करेज टू गो टू द हेयर ड्रेसर. सो कोशिश करें आप लोग बाहर ना जाएं प्लीज. ठीक है? दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट आई थिंक हैज हर ओन प्रॉब्लम्स. Government has its own problems. It's not going to tell us more about corona. इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड. सो बेटर है कि हम ही एक दूसरे को कहें. ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर द डाइग्रेशन. आई कम बैक टू चार्ल्स पैलिसर. चार्ल्स पैलिसर का नाम लिख लिया. इसके नॉवल का नाम है द Quincunx, Quincunx, 1989. या सेकेंड नंबर इन द वर्ल्ड हो गए हम लोग. ओके अच्छा, ये जो नॉवल है ये क्यों फेमस है? क्योंकि आज ज्यादातर हमको अम्बर्टो इको का नाम, अम्बर्टो इको का पता है आपको? अम्बर्टो इको जिनकी अभी डेथ हुई थी, अम्बर्टो इको का नाम लिखिए. अम्बर्टो इको का एक नॉवल है जो बहुत फेमस है, द नेम ऑफ द रोज. लिखो, अम्बर्टो इको's वेरी फेमस पोस्ट मॉडर्न नॉवल द नेम ऑफ द रोज, जो एक मिस्ट्री का एटमॉस्फेयर, हिस्ट्री का एटमॉस्फेयर उस नॉवल में दिखाया गया. वो वही एटमॉस्फेयर चार्ल्स पैलिसर ने द Quincunx में दिखाया. तो ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से Quincunx जो है वो एक ट्रू कॉपी है द नेम ऑफ द रोज रिटन बाय अम्बर्टो इको. तो देखिए, मैं बहुत सारे नाम लेता जा रहा हूं. अच्छा, एग्जाम तो हुमा बेटा, मैं क्या करूं? इवन आई एम टू मच इन टेंशन बिकॉज आई एम ऑल्सो अपीयरिंग इन द एग्जाम. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं लेना चाहिए इनको वैसे, बट अगर एग्जाम होगा तो बच्चे जाएंगे ऑब्वियसली एंड इट विल स्प्रेड. वी कांट कंट्रोल दिस टेल्स अस दैट वी आर अंडर द क्लचेस. देयर वी विल फील दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी. आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी लीडर फॉर दैट, बट ओवरऑल सिस्टम समवेयर दैट वी आर समवेयर अंडर द चेंज. आई थिंक we were never born free, and again in the name of democracy we are under the clutches of these leaders and all. Chaliye, so I have my own views regarding that. Clear? So Charles Palliser's the Quincunx एक बार बोल के देखो. मुझे लगता है कि तुमको ये सारे नॉवल याद हो जाने चाहिए. ठीक है, मैं एक बार सारे नॉवेल्स के नाम रिपीट कर देता हूं. मैंने आज के कौन कौन से नॉवेल्स के नाम लिए हैं. आई स्टार्टेड विद Janet Winterson's Oranges Are Not the Only Fruit. Okay, this is a lesbian novel. Okay, a queer character. The second one was The Virgin in the Garden, published in 1978. In this novel, there comes the reference of both the Queen Elizabeth I and Elizabeth II. Then I talked about Possession, a romance, published in 1990. This is written by A.S. Byatt, who won the Booker Prize in 1990. Okay, and I'm talking about historiographic metafiction today. Historiographic metafiction is the term introduced and coined by Linda Hutcheon. She belongs to Canada. Clear? What is historiographic metafiction? It has 3 properties, aspects: fiction plus theory plus history. Clear? And then I talked about John Fowles' famous novel, The French Lieutenant's Woman. Then Salman Rushdie's Midnight's Children. Then Shashi Tharoor's The Great Indian Novel. I spoke a little bit about this, that the Great Indian Novel is about Mahabharata. Actually, the story in prose about Mahabharata. Then Michael Odanje,
ONDAATJE. Michael Odanje is from Sri Lanka. He has taken citizenship of Canada. Okay, his novel, The English Patient. I also talked about Anil's Ghost, which was again written by Michael Odanje. Then I talked about Thomas Pynchon's famous, very famous novel, Mason and Dixon. Then I talked about Kurt Vonnegut's Slaughterhouse 5, which is about Auschwitz. That is the concentration camp in the Nazi government by Hitler. Okay, so again history is present in that novel. Then I talked about Alan Hollinghurst, a gay writer. He is famous for writing gay fiction. His novel, The Swimming Pool Library. I took the promise from you, but you did not say that you would read the detailed summary of this novel. 1988 it was published in. And then The Folding Star. Then I talked about Peter Ackroyd, the famous biographer of Charles Dickens, T.S. Eliot, and this William Blake. His novel, The Last Testament of Oscar Wilde. And then I talked about Oscar Wilde and his works, that Oscar Wilde is again a constant presence in the net exam. Then I talked about Charles Palliser, his novel The Quincunx. And when I was talking about Quincunx, published in 1989, I also gave you the reference of The Name of the Rose, written by Umberto Eco. I think he died last year or say this year, I don't remember. Okay, now let us come to this another writer, Matthew Neal. Matthew, write down Mathew, Matthew, Kneale. Matthew Neal's English Passengers. This is a very famous novel, English Passengers. It was published in 2000. This talks about the British colonialism in Tasmania. So there is again a history is involved in this novel. Okay, fiction is there, the fictitious characters are taken, the novel story of the novel is set in some historical setting. Okay, and then the writer applies the theories like post-colonialism, or say the theories of apartheid, and the theories and criticism of ethnic studies and all. Clear? So this Matthew Neal, a new name I think for you. How many of you have heard about Matthew Neal? Matthew Neal, Kneale. देखिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं या किसी से कोचिंग नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने पेपर्स को स्टडी करके अपना थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं. लेकिन देखिए, आपने नोटिस किया होगा उनका नेट क्लियर नहीं होता. उसका कारण होता है क्योंकि क्वालिफाइड फैकल्टी सब जब आप पढ़ते हो, वो एक अलग मेथड होता है. उससे आपको राइटर बिल्कुल, जो टीचर होते हैं वो बिल्कुल आपको अपडेट कर देते हैं. सो डोंट शाय, टेक एडमिशन इन माई इंस्टीट्यूट. और ठीक है, कोरोना की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल हो रखे हैं और हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं. और लेकिन फिर भी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. उनको मालूम है, जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल मिला है या जिनको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं, उनको पता चलता है कि एडमिशन लेना, उसके अलावा हम सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं ले सकते. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ यूज फाइनेंशियल कंडीशन इज वीक दीज डेज, बट स्टिल यू कैन कॉन्टेक्ट मी. मैं सही बता रहा हूँ, गाइडेंस के बिना जितने भी बच्चे मुझसे एग्री करते हैं, कम से कम लिखो तो सही, मुझे पता चले, अदरवाइज मुझे लगेगा मैं ही बोले जा रहा हूं. गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं देखता हूं कई बच्चे यूट्यूब से कहते हैं हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं. अरे भाई, यूट्यूब पे तो वी कैन नॉट अपलोड ऑल द क्लासेस देयर. ओके, एंड क्लासरूम इज क्लासरूम, वेदर इट इज ऑनलाइन क्लासरूम और ऑफलाइन क्लासरूम. क्योंकि जैसे ही ये नेट का एग्जाम हो जाएगा, आई विल नेवर कम ऑन फेसबुक अगैन. इफ आई कम, आई विल बी जस्ट डूइंग काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल. ओके, आई विल बी जस्ट टचिंग अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस एंड ऑल. बट एक होता है ना, एक रियल क्लासरूम का कंडीशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो दोज हु एग्री विद मी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका बहुत बेस्ट क्वालिटी की यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बावजूद भी आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग. ये प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक लेक्चर, जब मैं एक लेक्चर देता हूं तो आपको इतनी जानकारियां देता हूं, तो अंदाजा लगाओ जब 4-5 महीने की डिटेल्ड कोचिंग लेते हैं तो हमारा लेवल कहीं से कहीं पहुंच जाता है. एंड दिस इज अ फैक्ट दैट वंस अ स्टूडेंट टेक्स कोचिंग फ्रॉम मी, मैं अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना बहुत जरूरी है. कोई भी बच्चा, उसका नेट तो क्लियर हो ही जाता है. अगर नहीं भी होता है ना, तो वो कभी भी बुरा नहीं बोलता मेरे बारे में. उसका कारण बताता हूं आपको. मैंने देखा है ज्यादातर टीचर्स को बच्चे बाद में बुरा बहुत बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं. लेकिन मैंने देखा है मेरी भगवान की दया से उतनी बुराई नहीं करते हैं. उसका कारण है क्योंकि वो इतना सीखते हैं, इतना उनको स्टडी मटेरियल में देता हूं कि हाँ, मैं सच कह रहा हूं. शत्रुपा, थैंक यू वेरी मच दैट यू आर सपोर्टिंग मी. व्हाट आई एम सेइंग दैट गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये बात आप मान के चलो.
ओके मैं तो इस एज में भी अपने गाइड्स के पास जाकर के बैठता हूं ताकि मुझे मतलब कुछ भी नया सीखने को मिल जाए। और थैंक गॉड हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं अभी भी कि अगर हम अभी भी जाके बैठ जाएं तो वो घरेलू बातें नहीं करते हैं। वो पता क्या कहते हैं, वो एकदम से हमें कोई टर्म पूछ लेते हैं, हमें ये नॉवल पढ़ लिया क्या। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ कि जब मेरे पीएचडी का वाइवा हुआ ना, तो हिमाचल यूनिवर्सिटी से, शिमला से एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर मेरा वाइवा लेने आई। तो जो मेरा वाइवा लेने आई तो मेरा नंबर है, लिखिए 98 सावित्री कुंबर, राइट डाउन माय नंबर 9828402032। दिस इज माय नंबर 9828402032। I will upload this as a video also on my YouTube. From there also you can take. I keep doing a lot much advertisement about my study material also. You can get my number. I repeat my number 9828402032. So I was telling you something. क्या बता रहा था मैं कि एक वाइवा लेने के लिए एक बहुत बड़ी रिटायर्ड प्रोफेसर आई शिमला यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर एमेरिटस वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है ये एमेरिटस वर्ड क्या होता है? Tell me how many of you are aware about the word emeritus? E-M-I-R-I-T-U-S. I'm sorry, I'm digressing, but it is something I feel like it is important. Emeritus. E-M-I-R-I-T-U-S. Emeritus. How many of you are aware about this word emeritus? अच्छा लगता मालूम नहीं है। एक प्रोफेसर की ड्यूटीज जब पूरी हो जाती है रिटायर होने के बावजूद भी, certain times this is a kind of title given to a retired professor, and then he or she is invited in the university after the retirement also, and then they perform their job there. उसको बोलते हैं प्रोफेसर एमेरिटस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है नेट लगता है आपको। अभी समझ में आ गया एमेरिटस। सो हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जसबीर जैन। शी इज वेरी ओल्ड नाउ, शी इज मोर देन 85 आई थिंक। तो मेरा वाइवा कब हुआ होगा अंदाजा लगाओ, कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो वो जो डिपार्टमेंट में जो मैम आई शिमला यूनिवर्सिटी से, रिटायर्ड प्रोफेसर, देन शी वाज सो मच स्केयर्ड ऑफ दैट कि कहीं मुझे जसबीर जैन मैडम ना दिख जाएं डिपार्टमेंट में, क्योंकि जैसे ही जसबीर जैन मैम दिखेंगी, अनदर प्रोफेसर एमेरिटस इन आवर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो मैंने देखा पर्टिकुलरली शी वाज आस्किंग मी कि जसबीर जैन तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मुझे मिलेंगी वो मुझे पूछ लेंगी कि तुम्हारा काम किस पे चल रहा है। काम का मतलब, बट आप क्या रिसर्च कर रहे हो? It means every time people once you get into the university, you will be put your heart and soul, every limb of your body in research. Okay, and once the research is over, another project will be there, and then you will get busy in doing researches and all. Okay, and then the contribution, ये लाइब्रेरी में जो बुक्स भरी रहती हैं, ये रिसर्चेस के बाद ही आती है बच्चों। तो प्रोफेसरशिप की जब जॉब का आप सपना देखो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे हंसी आ गई कि मैडम को उन बड़ी मैडम से कितना डर लग रहा है। एंड देन आई रियलाइज, क्योंकि वो मैडम हमें भी मिलती है अगर, तो वो पूछ लेती है कौन सा पेपर पब्लिश हुआ है क्या तुम्हारा, तुमने अभी किस पे काम कर रहे हो, तुम बहुत स्लो हो, तुम लिखते नहीं हो। सो दीज काइंड ऑफ पीपल, प्रोफेसर्स वी हैव टिल टुडे। अभी भी हमको डर लगता है कि अगर वो मिल जाएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी रिसर्च क्या चल रही है, कोचिंग क्या चला रहे हो, कोचिंग को बंद करो, किसी कॉलेज को ज्वाइन करो। वो कोचिंग को अच्छा नहीं मानते हैं। कोचिंग दे से दैट इट इज सिंथेसाइजिंग ऑफ नॉलेज। हालांकि अब वो मुझसे बहुत खुश हैं, शी नोज दैट आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, एंड अभी सारे प्रोफेसर्स को पता है, एंड कई प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, एंड दे आर हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट सिंथेसाइजिंग बट जनरेटिंग नॉलेज। सो जनरेटिंग इन द सेंस कि हम केवल ऐसा नहीं है कि भाई उनको केवल रटवा दें चीजों को। वी आर रियली क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर इन द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कैन रियली गेट नॉलेज, इतना नॉलेज कि वो उनको यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल सकता। ऐसा मैं क्लेम करता हूं कि वंस यू टेक एडमिशन इन माय इंस्टीट्यूट यू विल रियली बी एनलाइटेंड। ओके, चलिए अब वापस आते हैं। सो आई एम सो सॉरी आई स्पोक समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई वेस्टेड योर टाइम। मैथ्यू नील, राइट डाउन मैथ्यू नील, K-N-E-A-L. Matthew Neal's English Passengers is famous. It was published in 2000. Okay, and it is the novel about British colonialism in Tasmania. इतना सा लिख लीजिए, क्या पता वो क्वेश्चन पूछ ले। English Passengers. नेक्स्ट राइटर का नाम लिखिए जूलियन बार्नेस, Barnes. Julian, Julian, Julian Barnes. Have you ever heard about Julian Barnes' name? No? Okay.
ये आपको 100% एग्जाम में दिख जाएगा नॉवल. इट इज अ डिटेक्टिव वर्क अलॉन्ग विद बायोग्राफी. सो अगेन फॉल्स इन दिस कैटेगरी ऑफ मेटाफिक्शन. ओके, सो फ्लॉबर्ट्स पैरेट, इनके नॉवल का नाम लिखिए. अगेन इट फॉल्स इन हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन. जूलियन बार्नीज detective work and biography, published in 1984. The name is Flaubert's Parrot. Flaubert. अच्छा, फ्लॉबर्ट का नाम सुना है क्या आपने? इज अ फ्रेंच राइटर. फ्लॉबर्ट, फ्लॉबर्ट जिसका मैडम बॉवरी बहुत फेमस है. चलिए लिखिए, एक होमवर्क लिखिए अभी. मैडम बॉवरी पे क्वेश्चन आया था कि मैडम बॉवरी, कितने बच्चों को मैडम बॉवरी का पता है? चलिए बताइए. मैडम बॉवरी, मैडम बॉवरी, वट एवर इज द प्रोनाउंसिएशन. How many of you are aware about Flaubert's Madame Bovary? एक लड़की होती है, उसकी शादी एक किसी गांव के लड़के से कर देते हैं जो डॉक्टरी का पेशा करता है. और उसमें लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं, तो इज नॉट अ वेरी फेमस डॉक्टर एंड इज नॉट वेरी रिच. ओके, तो ये जो लड़की है, देन शी फॉल्स अंडर द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग मटीरियलिज्म इन द सोसाइटी. और किस तरह से फिर वो शी फॉल्स प्रे टू डिफरेंट लवर्स. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर शोन. देन उसकी एक लड़की भी हो जाती है, और वो क्या करती है, बहुत सारे झूठ बोल करके अपने हस्बैंड से अलग अलग लोगों से मिलने जाती है, उनसे शी टेक्स गिफ्ट्स ऑल्सो. ओके, एक बार क्वेश्चन आया था नेट में 2 या 3 नेट पहले कि मैडम बॉवरी व्हेन शी गोज टू मीट हर लवर्स, तो वो क्या बहाना करती है? तो एक बहाना ये करती है कि मैं पियानो सीखने जा रही हूँ. ओके, और बाद में जब उसकी बातें सबको पता चलती तो शी कमिट्स सुसाइड. सो इट्स अगेन अ वेरी ट्रेजिक टेल. फ्लॉबर्ट की मैडम बॉवरी बहुत फेमस है. पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा. ओके, एंड जुलियन बार्नीज डिटेक्टिव वर्क एंड बायोग्राफी विच फॉल्स इन दिस जियोग्राफिक मेटाफिक्शन इज फ्लॉबर्ट्स पैरेट, पब्लिश्ड इन 1984. मैं थोड़ा डिटेल भी बता रहा हूं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि सर केवल नाम लेके जा रहे हैं. ओके, और अगला राइटर लिखिए, जॉर्ज मैकडोनाल्ड फ्रेजर. जॉर्ज मैकडोनाल्ड फ्रेजर, FRASER. जॉर्ज मैकडोनाल्ड फ्रेजर, इनका जो वर्क है ये बहुत फेमस है बच्चों. इसमें इंडिया की म्यूटिनी का रेफरेंस आता है, 1857 की, जो उसको मैं म्यूटिनी कहना पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज दैट वाज अ फुल फ्लेज्ड काइंड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, बट फ्रॉम इंग्लिश एंगल इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ म्यूटिनी. म्यूटिनी इज अ वेरी स्लाइट वर्ड. ओके, तो जो टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज है, इसमें देयर कम्स अ रेफरेंस ऑफ अफगानिस्तान वॉर. Incompatible relationship. What is this incompatible? No. It's not about incompatible relationship. It is about Madhusudan. It is about the bad ill effects of materialism. How they can disturb your marital life. Clear? Okay, I'm so sorry. I was talking about George. I was answering Madhusudan's question. George MacDonald Fraser's novel Tom Brown's School Days. And there comes the reference of Afghan war, which occurred in 1842, and then British acquisition of the Punjab and the 1857 mutiny. So all these references come in this novel, Tom Brown's School Days, written by George MacDonald Fraser. Okay. Next important writer which you will find in the exam, or you may find, is James Gordon Farrell. नाम जरूर सुना होगा आपने. James Gordon, Gordon Farrell, Farrell. जेम्स गॉर्डन फैरल, ये बहुत फेमस नाम है. मैंने इसका एक PDF बना करके सभी बच्चों को दे रखा है जो पेड स्टूडेंट्स हैं. आप उसको देखिएगा, उसमें राज क्वार्टेट के ऊपर एक अलग से PDF बना रखा है. या इट वाज पब्लिश्ड. इनका जेम्स गॉर्डन फैरल्स का जो नॉवल है, किसका पूछ रही है क्वेश्चन आप शत्रुपा? इसका डेट मैंने मेंशन नहीं कर रखा है. ये अराउंड मेरे ख्याल से लिखा गया था 1984 के आसपास. आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है. जेम्स गॉर्डन फैरल्स नॉवल, द सीज ऑफ कृष्णपुर. इसकी समरी आपको पढ़नी है आज. द सीज, SIEGE, सीज ऑफ पब्लिश्ड इन 1973. एंड द हिल स्टेशन, और दूसरा नॉवल है द हिल स्टेशन, 1981. Very famous novels. Again, there is the link of the Anglo-Indians and the people. There is a clash of the Indian people and the people who remained in India after independence.
ओके, सो जेम्स गॉर्डन फेरल्स, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. द सीज ऑफ कृष्णपुर पब्लिश्ड इन 1973 एंड द हिल स्टेशन 1981. अब आ जाओ बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे, दैट इज पॉल स्कॉट का नाम सुना है आपने? पॉल स्कॉट, PAUL, पॉल स्कॉट, SCOTT. पॉल स्कॉट का राज क्वार्टेट बहुत फेमस है. राज क्वार्टेट, QUARTET, राज क्वार्टेट. इनके क्वार्टेट मतलब 4 नॉवेल्स हैं, जैसे ट्रिलॉजी में 3 होते हैं. ओके, राइट डाउन द 4 नॉवेल्स, एक एक करके लिखिए. स्टार्ट करूं बोलना? फर्स्ट लिखो द ज्यूल इन द क्राउन 1966. द ज्यूल इन द क्राउन 1966. इसको बोलते हैं राज क्वार्टर. राज इज द वर्ड यूज्ड फॉर द कॉलोनियल इंडिया. ओके, written by Paul Scott, PAUL SCOTT. Paul Scott's The Jewel in the Crown, published in 1966. Okay. Second one is The Day of the Scorpion. The Day of the Scorpion, 1968. Okay. Third one is The Towers of Silence. आराम से लिखिए धीरे धीरे. The Towers of Silence, 1971. The Towers of Silence, 1971. Fourth is A Division of the Spoils. Spoils का मतलब होता है लूट का माल. A Division of the Spoils, published 1975. अब इसको रटने के लिए वो बना लीजिए इनके जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, बिकॉज 3 में द आ रहा है, लास्ट में ए आ रहा है. ओके, सो जूल डे टावर्स डिवीजन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो. जूल डे टावर्स डिवीजन, ऐसे करके आप एक उसका सीक्वेंस बना लीजिए. देन यू विल बी एबल टू रिटेन in your memory, like what are the 4 novels, because with the Jewel in the Crown, the Day of the Scorpion, Nissim Ezekil ki The Night of the Scorpion famous है ना. In the same manner, this is the Day of the Scorpion, the Towers of Silence, a Division of the Spoils. Paul Scott है, इंडिया के बारे में लिख रहे हैं. So you can understand that people, they never praise India. They talk about the extreme heat of India. They talk about the laziness of the Indians. उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड हमारे प्रति रहा है उससे रिलेटेड ये नॉवेल्स हैं. ओके, अच्छा, एक नॉवल बहुत फेमस है, इनका लास्ट नॉवल है स्टेइंग ऑन. ये क्वार्टेट में नहीं आता है, बट द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द अर्लियर नॉवेल्स. स्टेइंग ऑन से पता चल जाता है. राइट, लिखो नॉवल का नाम, स्टेइंग ऑन, STAYING, Staying On, published in 1977. It is about the couple, who are old enough, and they are enough old, and they decide to remain in India. They consider that this is our country now. Okay, so there comes some positivity, but again there is that dichotomy present, the two different threads of the ways of thinking, a standpoint about India, colonial India. Okay, now write down Timothy Mo. आपने टिमोथी मो का नाम सुना है कभी? टिमोथी मो हांगकांग में जिनका जन्म हुआ था, चाइनीज थीम पे लिखते हैं, लंदन पे लिखते हैं. देखो, काजुओ इशिगुरो और टिमोथी मो बहुत फेमस राइटर्स है बच्चों. ये अभी इनको बुकर भी मिला था मेरे ख्याल से, काजुओ इशिगुरो को, और शायद नोबेल भी मिला है. आई एम नॉट श्योर, अब नोबेल के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं था, बट आई एम डैम श्योर दैट ही वन बुकर प्राइज. किसका, कौन से नॉवल की बात कर रहे हो? डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स 1975, कुंदन. द डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स पब्लिश्ड इन 1975. ओके, अच्छा, टिमोथी मो का नाम लिखो पहले आप. टिमोथी, TIMOTHY, टिमोथी, MO, मो. Timothy is a separate word, Mo is a separate word. Okay, Timothy Mo. He was born in Hong Kong 1950, and that English Chinese identity, like there are different people living in diaspora in the other countries, so there can be any question. They can ask you, like, which writer is the diasporic one. So we need to have a lot much knowledge when we talk about these novels, on these writers and all. Okay, so Timothy Mo's novel Sour Sweet, SOUR, Sour Sweet, SOUR, Sour, SWWT. It was published in 1983. Sour Sweet, very famous novel. Okay, and then the second novel, which is again very famous, An Insular Possession. An Insular Possession. In this, there is a reference of this opium war.
So again, it falls in that category of metafiction. Clear? Write down Timothy Moore is a novel Sour Sweet 1983 and An Insular Possession in 1986. There comes the reference of Opium War, and this falls in again geographic metafiction. Clear? And now the next name is Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro बहुत फेमस राइटर हैं. अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है इन नॉवेल्स को पढ़ने में, सो आपको थोड़े से लेक्चर्स और अटेंड करने चाहिए मेरे, तब आपको धीरे धीरे ये इंटरेस्ट आने लगेगा कि we talk about, because there is a touch of history in all these novels, and history of not a particular local area but world history. Okay, for example, जैसे आप जब प्रोफेसर बनोगे, इवन मुझे भी इसीलिए मैं बार बार एग्जाम देता हूँ, दो पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग मी फॉर दैट, बट आई डोंट केयर. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अब, जैसे आई हैव रियली परचेज सर्टेन बुक्स ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं डिटेल नॉलेज होना चाहिए. ओके, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ओके, एंड द रेपरकशंस, किस तरह से वर्ल्ड वॉर अफेक्टेड the concept of identity, the concept of diasporic conditions, then the concept of nationalism, then the concept of there are different concepts, the concept of history. So these writers, when they become diasporic and they start living in the other countries, and when they look back, in Janice Faisal Lee, they look back at their own countries, living in England, for example, Salman Rushdie living in England, but writing about India. आपने वो पढ़ा होगा ना, इनके ऐसे बहुत फेमस हैं सलमान रश्दी के, क्या नाम है उनका, मुझे ऐसे के कलेक्शन का नाम बताओ सलमान रश्दी के. वो हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, पर मैं भूल गया इस वक्त एकदम से, जब मैं कैमरा फेस कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, क्लास में नहीं भूलती है. चलिए, काजुओ इशिगुरो का द रिमेन्स ऑफ द डे पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसमें मूवी भी बनी हुई है, मूवी देख लीजिएगा. इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर, द कॉन्सेप्ट ऑफ जूइश पीपल, एंटीसेमिटिज्म. एक सीन आता है उसमें नॉवल में कि दो लड़कियां काम पे रखी गई हैं और वो किस तरह से उनको थोड़े दिनों में हटा दिया जाता है बिकॉज दे आर जूइश. ओके, सो अमेरिका, द इन्वॉल्वमेंट एंड द इंक्रीजिंग पावर ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द डिक्रीजिंग एरिस्टोक्रेसी, ये सारी चीजें द रिमेन्स ऑफ द डे एज द टाइटल सजेस्ट. एंड द रिमेन्स ऑफ द डे के डायलॉग्स भी बहुत फेमस हैं. There are certain dialogues which are world famous, and you can demand I will give certain dialogues to you, though I have already given it as a I think mock test to all of you. Remains of the Day लिख लीजिए, 1989 में पब्लिश हुआ, इसमें मूवी बनी हुई जैसे कि मैं बता रहा हूँ. वेरी फेमस नॉवल. काजुओ इशिगुरो को एक बार चेक करके बताओ नोबेल मिला है कि नहीं मिला है इनको. बुकर तो मिला है, आई एम श्योर अबाउट बुकर. दूसरा नॉवल इनका जो बहुत फेमस है, एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड. एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये जो आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड है ना, इसमें राइटर ने ही हैज टॉक्ड अबाउट एन आर्टिस्ट, चाइनीज आर्ट फॉर्म, फ्लोटिंग आर्ट फॉर्म होता है. तो किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में चाइनीज आर्ट को वो फेमस करता है, एंड लुक बैक. तो कहीं ना कहीं देयर इज एन पॉलिटिकल एजेंडा विच इज हिडन इन द नॉवल. एजेंडा का मतलब ही होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर. ओके, सो काजुओ इशिगुरो एक बहुत फेमस नाम हो चुके हैं आज, जापानीज नहीं है, लिविंग इन इंग्लैंड. मुझे देख के बताइए नोबेल प्राइज मिला क्या इनको? आई एम नॉट श्योर. आई थिंक रिमेन्स ऑफ द डे पब्लिश्ड 1989, अ वेरी फेमस नॉवल. इसमें क्या है, एक वो दिखा रखे हैं, एक बहुत बड़ा घर दिखा रखा है पुरानी एरिस्टोक्रेटिक आदमी का, और किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं इनके. चलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं, आप इसको पढ़िएगा, फिल्म भी देख सकते हैं आप. ओके, द रिमेन्स ऑफ द डे 1989 एंड एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये दोनों पे क्वेश्चन एक पे आ रखा है, फ्लोटिंग वर्ल्ड वाले पे अब आ सकता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अदर थिंग्स. अब एक दो चीजें और लिखिए आप, थोड़ा सा बातचीत करते हैं. आपने रोजर फ्राई का नाम सुना है क्या? रोजर फ्राई, बताइए रोजर फ्राई कौन थे? रोजर फ्राई का नाम सुना है क्या?
रोजर फ्राई का आपको क्वेश्चन आएगा बिकॉज वो ब्लूम्सबरी ग्रुप में एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग 1911 में और 1912 में जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी ना, उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। एंड वाज एन आर्ट क्रिटिक ऑल्सो, रोजर फ्राई। तो आप एक बार इनका नाम लिख लीजिए। दे विल आस्क यू वन नेम। इनका कलेक्शन था एक बहुत फेमस है, वो नाम है विजन एंड डिजाइन। विजन एंड डिजाइन लिख लीजिए, फिर मत कहना कि क्वेश्चन बताया नहीं। ये वो चीजें हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप केवल ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन डन और हम सब चौसर और यही पढ़ते रह जाते हैं। ओके, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी आप थोड़ा अटेम्प्ट कर लोगे एंड देन यू नो द कॉमन ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। ठीक है, रोजर फ्राई मैंने बता ही दिया। ही बिलोंग्स टू 4-5 क्लास पहले आई डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन ब्लूम्सबरी ग्रुप। ओके, इन दैट नॉवल रोजर फ्राई नॉवलिस्ट नहीं है, ही इज एन आर्ट क्रिटिक। ओके, ब्लूम्सबरी ग्रुप में वनेसा बेल भी तो थी ना, इनकी क्या नाम था इनका, वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर। ओके, सो ये काफी एडवांस लोग थे। ई.एम. फोस्टर इसका पार्ट थे, आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी। सो इनका एक ऐसे कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे ऐसेज आते हैं, विजन एंड डिजाइन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। ठीक है, रिटन स्ट्रेचे का भी नाम मैंने लिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। अच्छा, ऑलरेडी आई थिंक व्हाट इज द टाइम, 1 घंटे से ज्यादा हो गया कि क्लास लेते हुए। उसके बाद आपको एक और नॉवल, एक छोटे से ऐसे का नाम लिख लीजिए विच इज अगेन वेरी फेमस। राइट डाउन दिस मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। बताइए किसका लिखा हुआ ऐसे है? मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, ये 1924 में एक कलेक्शन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई ये बात। जस्ट अ मिनट बच्चों, एक लिखो एक बायोग्राफी रोजर, हाँ मैंने शायद इसको कल शेयर किया था फेसबुक पे। रोजर फ्राई अ बायोग्राफी लिखिए, एक टाइटल है रोजर फ्राई अ बायोग्राफी। It was written by Virginia Woolf, because we mostly know Virginia Woolf for A Room of One's Own, for The Waves, Mrs. Dalloway. You know, we remember her being for being a novelist, but she was a biographer also. She was a great critic and essayist also. Clear? So आज की क्लास में मैंने इशिगुरो को 1917 में नोबेल मिला है, तभी कह रहा था, it was hitting my mind that he was awarded Nobel Prize. देखिए कि उसको बुकर भी मिला है क्या, चेक करके मुझे बताइए। ठीक है, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन उनका एक ऐसे है, और इसमें थोड़ा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्जीनिया वुल्फ का एक अलग से पीडीएफ मैंने भेज रखा है, और मॉडर्निस्ट राइटर्स में जाके चेक कीजिएगा। बड़ी बड़ी पीडीएफ्स आपको, जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन ले रखा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में, उनको आप यू हैव टू चेक। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द स्टडी मटेरियल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। देयर इज अ ग्रेट क्विज ऑफ वर्जीनिया वुल्फ आल्सो प्रेजेंट ऑन माय यूट्यूब। आप देख लीजिए, एग्जाम से पहले जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो, पता नहीं कहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एक तो मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा याद आया, रोजर फ्राई अ बायोग्राफी रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, और एक मैंने आपको बताया मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है, बहुत फेमस है। एक दो चीजें और लिखिए आप, वर्जीनिया वुल्फ, बबली वर्मा, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन इज एन एसे बाय वर्जीनिया वुल्फ। ओके, एक लिखिए जनरल स्ट्राइक जो इंग्लैंड में हुई थी 1926 में हुई थी। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, मैं हमेशा से सजेस्ट करता रहा हूं। आई हैव अपलोडेड 3-4 वीडियोज लाइक हाउ टू क्वालिफाई नेट, हाउ टू क्रैक नेट जेआरएफ। हालांकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा झूठा प्रचार करते हैं कि मेरे पर्टिकुलर एडमिशन लेने के बाद 15 दिन में एक लड़के ने या बच्चे ने 15 दिन में जेआरएफ क्लियर कर लिया। वो एक तुक्का होता है, वो बच्चा पहले से मेहनती होता होगा। ओके, सो लाइक सपोज आफ्टर अटेंडिंग माय लेक्चर्स यू क्वालिफाई जेआरएफ, देन आई कैन नॉट टेक द होल क्लेम। यू मस्ट हैव बीन ऑलरेडी अ स्टूडियस गाय एंड गर्ल। सो एक बात का ध्यान रखिएगा, डिटेल में आपको बहुत जाना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 to 12 बुक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़नी पड़ती हैं। 100 ईयर वॉर भी पढ़ना, हाँ 100 ईयर ऑफ वॉर भी, उसका भी एक लेक्चर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन सी दैट, सुनील निषाद। ओके, वो उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन से दो गुटों के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, उसके रेपरकशंस क्या थे,
कौन सा घराना खत्म हो गया, प्लांटेजेंट हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं उसमें से, ठीक है। चलिए, जनरल स्ट्राइक 1926 में आई, और जनरल इलेक्शन जब 1923 में हुए थे तो लेबर पार्टी को जीत मिली थी। लिख लीजिए, टोरी एंड विग पार्टी के बारे में पता है कि नहीं पता, पहले आप बताइए। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आर यू अवेयर अबाउट टोरी एंड विग? जब हम लोग एब्सलम एंड एक्टिटोफल पढ़ते हैं ड्राइडन का, देन वी कीप टॉकिंग अबाउट दिस टोरी एंड विग। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप इसको ऐसे याद रखें। नो जनरल हुमा खान, जनरल स्ट्राइक इन इंग्लैंड पे क्वेश्चन आया तो 1926, ओके। और एक मैं बता रहा था टोरी और विग के बारे में। देखिए, जो विग्स जो पहनते हैं ना, विग, जैसे आपने कोई पुराने राइटर देखे होंगे विग पहनी हुई है उन्होंने, तो वो लोग होते हैं मोस्टली प्यूरिटन्स, यानी कि वो होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, यानी कि, और प्यूरिटन आपको पता है दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द किंग। इसका मतलब है वो डेमोक्रेटिक सेटअप लिए हुए होते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग लेबर क्लास को पसंद करते हैं। और आप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आज इंग्लैंड में दो पार्टीज हैं, या मैंने कई वीडियोज में कुंदन ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो विग का मतलब आ जाता है इज कैथोलिक एंड टोरीज। ये क्या हो रहा है सुनील निषाद? ये गलत आंसर है कि विग कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट टोरी है। आई एम सो सॉरी, ये गलत आंसर है। विग होते हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और जो राइट्स होते हैं लेबर क्लास के उनको पसंद करते हैं, ओके। उसी से बाद में लेबर पार्टी बनी। और टोरीज जो होते हैं वो रॉयलिस्ट होते हैं, वो राजा को पसंद करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में पहले से ही एक एक टग ऑफ वॉर हैड ऑलरेडी बीन देयर, कि there are certain people who talk about parliamentary position and parliamentary rights and the parliamentary system of government, okay, and some people say that the powers should be there, though in titular form there should be in the royal people. तो अभी भी आपने देखा होगा कि रॉयल का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे, ओके, लेकिन दो पार्टीज है वहां पे, टोरीज और विग से होते हुए आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि मिल्टन को आप देख लीजिए, मिल्टन विग पहनते थे, तो मिल्टन से आपको पता चल जाएगा, जिन्होंने एरोपेजेटिका लिखा। एरोपेजेटिका किसके ऊपर लिखा कि भाई हमें हर तरह की पब्लिशिंग की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं वो। इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों ने बाद में अमेरिका एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जो विग्स थे दे वर अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था, पता होना चाहिए। उसके बाद राजा ने उनको जहाज भर भर करके और अमेरिका में जो लैंड थी वहां छुड़वाया। सो ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये विग्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। सो सिंस बिगिनिंग देयर हैज बीन 1215 से मैग्ना कार्टा से ही देयर हैड बीन अ प्रॉब्लम कि रॉयलिस्ट होने चाहिए कि लेबर पार्टी होनी चाहिए। तो अभी मुझे जो बताना है कि 1923 के जनरल इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, लेबर पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन 10 महीने बाद वापस से रॉयलिस्ट आ गए थे। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि हाउ मॉडर्निज्म इज अफेक्टेड बाय, देखो आपको एक बहुत बेसिक बात बताने के लिए, अब आपको मैं बहुत डिटेल में ऑनलाइन क्लास में नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। देखिए, जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिकंस्ट्रक्शनिज्म, ओके। इसमें क्या होता है, सेंटर को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो जब हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो द वर्जन ऑफ ट्रूथ एंड द वर्जन ऑफ सेंटर इज चेंज्ड। जब हम लोग एक स्ट्रक्चरलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं तो देयर वी फील कि सेंटर में राजा है, गवर्नमेंट है, लेकिन जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो जाते हैं ना तो वी डोंट बिलीव इन द स्ट्रक्चर, ओके। इसका मतलब है कि जो सेंटर बिकम्स सेंटर, ये मैं समझाता हूं आपको। एक बात बताओ, जैसे भारत है, अलग अलग जातियां हैं, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें देन वी विल टॉक अबाउट द हायरार्की। हम कहेंगे कि भाई जो दलित है वो ब्राह्मण के आगे झुके, तो पर ये तो फिर आपको पता होना चाहिए ना, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट हायरार्की एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेंटर, यू आर टॉकिंग अबाउट द कर्नल ऑफ अ सेंटर। भाई सेंटर है, सेंटर के अंदर बड़ी जाति रहेगी, बाकी जातियां पेरिफेरल है। तो लेकिन जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो हम देन वी डोंट बिलीव इन दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चरल सोसाइटी। तो केवल सोसाइटी की बात नहीं है, देन वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल हु वर निग्लेक्टेड अर्लियर, ओके। अब जब हम क्वेयर थ्योरी की बात करते हैं, आपको एक बहुत कॉमनली ये सारी चीजें समझ लेनी है कि वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर्ल्ड। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म भी खत्म हो गया, ओके, वो तो लोगों की आदत होती है। सोकल इफेक्ट के बारे में मैंने बात कर रखी है नोट्स में। कितने स्टूडेंट्स जिनको सोकल इफेक्ट पता है? हेलो, कम ऑन, आर यू प्रेजेंट? सोकल इफेक्ट,
अगर आप सोकल इफेक्ट मुझे नहीं बताते हैं, इसका मतलब है जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे एडमिशन लेके बैठे हैं वो केवल पीडीएफ को ले लेते हैं, देन दे फील एम्पावर्ड दैट यू नो द स्टडी मटेरियल हैज बीन सेंट टू अस। यू नीड टू स्टडी दैट आल्सो, कम ऑन। सोकल इफेक्ट का मुझे जवाब दीजिए, और नहीं तो आज पढ़िए सब लोग बैठ करके, सभी पीडीएफ को चेक कीजिए। मैंने कितना रात रात भर जाग जाग के मटेरियल बनाया यार। सोकल इफेक्ट को लिख लीजिए साइड में, और अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर आपको अभी इतना छोटा सा एक बात पता होनी चाहिए। ये डांट सबको पड़ रही है इस वक्त कि एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और आप लोग पीडीएफ को स्टडी नहीं करते हो, क्या फायदा हुआ। चलिए मैं बात करता हूं कि व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड। देखो, जब हम लोग आज के पूरे लेक्चर में हमने हेजियोग्राफिक मेटाफिक्शन की बात की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म की बात चलती है तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग एक लियोटार्ड का नाम लिखो, आप लिखो लियोटार्ड, फ्रैंक्वा लियोटार्ड, FRANCOIS, फ्रैंक्वा लियोटार्ड, LYOTARD। कितने बच्चों ने फ्रैंक्वा लियोटार्ड का नाम सुना हुआ है बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म की सोकल की स्पेलिंग गलत है, हुमा खान, SOKAL है वहां पे। सुनो, अगर आपको स्टडी मटेरियल मिला है और आप 4 दिन नहीं दे सकते हो स्टडी मटेरियल को रात दिन जग करके, हैं, आपकी आंखें सूज जानी चाहिए। आप रात भर पढ़िए उसको, पढ़ के देखिए, पॉइंट बनाइए अपने। कौन कहेगा कि आपको 60-70 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उनमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि स्टडी मटेरियल मिल जाता है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, तो फिर आप एग्जाम में क्या आंसर लिख के आओगे। चलिए, गुस्सा जेन्युइन लोगों को आता है, ऑनेस्ट लोगों को गुस्सा आता है। चलिए, फ्रैंक्वा लियोटार्ड का नाम लिख के मुझे यस बोलिए, लिख लिया, मैं रिलैक्स हो जाता हूं। राइट डाउन फ्रैंक्वा लियोटार्ड, LYOTARD, फ्रैंक्वा लियोटार्ड, लिख लिया। इनकी एक बुक है बहुत फेमस है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, लिखिए। हिज वेरी फेमस बुक, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। उसका सब टाइटल है अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। राइट डाउन, ओके। इन दिस बुक ही क्रिटिसाइजेस द नोशंस ऑफ हिस्ट्री। ये पता होना चाहिए आपको। हिस्ट्री को पोस्ट मॉडर्निस्टिक, आपको एक काम करना है आज, आपको वहां पे हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। लेट मी ब्रेक सर्टन नोशंस ऑफ योर्स। One thing is that you will not get any question in Hindi, number one, though I am using bilingual mode of lecturing, that is a different thing, number one। तो आप लोग जितने भी वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब पे कि हिंदी में समझ में आ रहा है, समझ में आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट द टेक्निकल टर्म्स एंड द जार्गन। ध्यान से सुनो, मैं अपनी वीडियोस ज्यादातर इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज में क्यों बनाता हूं, हालांकि उसमें भी कई लोग नेगेटिव कमेंट लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं। अरे भाई, किताबी भाषा ही तो आएगी एग्जाम में, यस लिख के बताइए। क्या वो आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज देंगे? विल दे गिव यू सिंप्लीफाइड लैंग्वेज देयर? So understanding a concept is a different phenomenon, and there in a limited time reading that particular jargon and trying and understanding and then ticking mark the question, that is very, very important, and that can only be increased if you are aware about technical language। तो आप लोग आज पोस्ट मॉडर्निज्म का वीडियो देखेंगे मेरा, प्रॉमिस करो। पहले यूट्यूब पे जाएंगे, मुकेश पारिक कॉस्मोस टाइप कर लेंगे यूट्यूब पे, ओके, एंड यू विल वॉच माई वीडियो देयर। द नेम ऑफ द वीडियो इज पोस्ट मॉडर्निज्म। आप केवल आप उसको देखेंगे, आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ध्यान से सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, पॉइंट बनाएंगे, एंड देन यू विल रियलाइज दैट पोस्ट मॉडर्निज्म में दे क्वेश्चन द ट्रूथ, ओके। दैट ट्रूथ इज अ फैब्रिकेटेड कॉन्सेप्ट, ट्रूथ इज नथिंग, ओके, ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ने प्रॉमिस लिखा है, शत्रुपा ने और सताक्षी ने, बाकी लोग यस लिख रहे हैं। प्रॉमिस लिखिए मुझे, नहीं तो मैं फिर आपको ना तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और ना मैं फेसबुक पे पढ़ाऊंगा। मैं फिर अलग से कोई क्लास ले लूंगा अपने केवल पेड स्टूडेंट्स की। मैं साथ साथ में सभी स्टूडेंट्स की इसलिए हेल्प कर रहा हूं कि दूर दूर तक टीचर नहीं है, आपको कौन पढ़ाएगा। चलिए, 4 लोगों ने मुझे लिख के दिया है, बाकी लोग सिर्फ यहां पे दर्शक हैं, दे आर ऑडियंस, दे जस्ट वांट टू सी मी कि कैसा दिखता है। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता हूं क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, मुझे कटिंग कराए 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट हैंडसम। चलिए, गुस्सा शांत नहीं होगा आज प्रॉमिस लिखते जाओ, और आज वो वीडियो जरूर देखेंगे। मेरे वीडियो का यूट्यूब चैनल का नाम है मुकेश पारिक कॉस्मोस। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, इसमें कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर?
ये जो मैंने आपको बताया था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। सो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है कि यू डोंट बिलीव इन नॉलेज। जो भी है आपकी जो नॉलेज है, एक बात बताइए, आपकी जो नॉलेज है वो कहां से आई जरा बताओ। डोंट यू थिंक लाइक नॉलेज इज इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री। आपको आपकी मदर को किसी ने बता दिया, आपने वैसा का वैसा अपने आने वाली जनरेशन को बता दिया। मैं टेक आइस गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ाई लिखाई करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। पढ़ो ताकि पता चले कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ता हूं, इसका मतलब मैं तुम्हें अपनी टेबल पे बुक्स दिखाऊं क्या? देखो कितनी बुक्स दिखेंगी आपको। देखो ये देखो कितनी बुक्स खुली हुई हैं, इतनी सारी बुक्स दिख रही हैं आपको। एक टेबल पे इतनी सारी बुक्स हैं, तो जस्ट इमेजिन कितनी सारी बुक्स हैं। मैं हर वक्त इनको एक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, बुक्स ही बुक्स पढ़ना। इवन कि जिस पे ये फोन रखा हुआ है वो भी एक बुक का पाइल है, वो भी मैं आपको दिखा दूं, पता चले आप कितना पढ़ते हो। ये देखो इट्स अ पाइल ऑफ अ बुक। ठीक है, तो आप पढ़िए। मैंने अपना प्रूफ दे दिया कि आई एम रीडिंग एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग। चलो टॉपिक पर आओ अब। सो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है बताओ? दे क्वेश्चन हिस्ट्री, दे क्वेश्चन ट्रूथ, ओके, दे क्वेश्चन एवरी रिटन वर्ड ऑल्सो। ओके, जब हम लोग किसी चीज को क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक करते हैं। वी चैलेंज द स्ट्रक्चर। इट कैन बी इट कैन बी अ स्ट्रक्चर ऑफ से हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ स्ट्रक्चर, कम ऑन, ओके। जिसके पास पावर होती है उसने हिस्ट्री लिख दी। तो इतनी बेसिक बात समझा रहा हूं आपको कि हिस्ट्री कुछ नहीं है, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। द पीपल इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री इज अ पैलिम्पसिस्ट। जिन जिन के पास में पावर थी उन्होंने हिस्ट्री को लिख दिया। सो नाउ द पावर इज इन अवर हैंड, कॉमन मैन्स हैंड। दे शुड राइट हिस्ट्री, ओके, एंड हिस्ट्री हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसीलिए आज मैंने जो पूरा लेक्चर लगाया पोस्ट मॉडर्निज्म का बेसिक समझ में आ जाएगा कि क्यों सभी पोस्ट मॉडर्न फिक्शन में दे आर राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम देयर, कहीं से हिस्टोरिकल कैरेक्टर ले आएंगे एंड दे आर राइटिंग दैट हिस्टोरिकल कैरेक्टर इन देयर ओन वे। इट मीन्स you told us history from your angle, now I am going to write history from my angle, okay? So ये बहुत जरूरी है जानना। इसमें सारे पोस्ट कॉलोनियलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अलग बात करता है, वो फिर से हिस्ट्री की तरफ जाने की बात करता है। बट अगेन इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अगेन दैट थिंग वेयर दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ हिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा मैं नाराज इसलिए हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि केवल किताबों के नाम से भी नेट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो फूको का जो कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स का, फूको का जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, फूको का जो पावर का कॉन्सेप्ट है, दैट पावर इज इन सर्कुलेशन, एवरीवेयर देयर इज पावर एंड इट इज पावर हु क्रिएटेड हिस्ट्री। ओके, ऐसे ही हमको बता दिया कि मेल और फीमेल में मेल में ज्यादा पावर है। किसने बताया? हु सेज? हिस्ट्री सेज, स्क्रिप्चर से, सारी जो जितनी भी धार्मिक किताबें उनमें लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग अपना दिमाग खोल करके देखेंगे देन ओनली वी कम टू नो कि ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल ज्यादा पावरफुल है बल्कि। ओके, तो जो एस्टैब्लिश्ड हायरार्कीज होती है ना, उनको उलटने का भी काम करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, सो रीराइटिंग देयर वर्जन थ्रू फिक्शन, थ्रू बाय इन्वॉल्विंग थ्योरी एंड हिस्ट्री, ये दे क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ the reality. It means reality को क्वेश्चन किया जाता है, समझ रहे हो? So everything is topsy turvy when we see about अब मैं अगला लेक्चर आपको थोड़ा और थ्योरी पे दूंगा कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म और सोकल इफेक्ट क्या है, और इन सब चीजों के ऊपर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।